Okay, let's start with doubt solving of electrochemistry. So I'll go lecture by lecture, and whatever doubts you have in that particular lecture, you can tell me. Okay, so the first part was introduction to the term electrochemistry, which gives you the interrelation between the two different forms of energy. And what were they? Electrochemistry gives you an interrelation between two different forms of energy. Chemical energy and electrical energy. So from the term only you have an understanding about electrochemistry as relation between electrical and chemical energy. And these two energies are interconvertible. So we can have a conversion of electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy. Now this type of conversion is quite common and it happens in Electrolytic cells. electrolytic cell in the process called Electrolysis. electrolysis. So we know that in electrolysis, the electrical energy is converted into chemical energy because when you supply electrical energy, the compound which is called electrolyte breaks down into its ions and those ions move towards the respective electrodes, that is cathode or anode, and undergoes a redox reaction. So here the redox reaction which takes place, it is spontaneous or non-spontaneous? Non-spontaneous. Non-spontaneous, because we are supplying the electrical energy through which the redox is happening. So electrolysis actually works on a concept of a non-spontaneous redox reaction. This is very important. Non-spontaneous redox reaction. Now, on the other hand, if we talk about the chemical energy converted to electrical energy, now this type of conversion is found in what type of devices? Some mobile phone. Mobile phone batteries or the cells which we use in our household appliances. So here the stored chemical energy is converted into electrical energy, and this type of conversion happens in galvanic or voltaic cell. The cells or the batteries which are used for different appliances have this type of conversion wherein the chemical energy is converted into electrical energy. Now here, when a chemical reaction is taking place, that chemical reaction is able to generate electricity, and the reaction which takes place is also a redox over here. So in this case, we say that these cells or batteries works on the mechanism of Spontaneous. Yeah. spontaneous redox reaction. मतलब यहाँ पर redox reaction takes place on its own, and through that reaction, by the transfer of electrons, the electrical energy is generated. Clear? So that's the introduction to the term electrochemistry. Now the first part of the chapter deals with the concept of electrolysis or electrolysis. So to understand the electrolysis part, I have given the example of electrolysis of molten NaCl versus the electrolysis of aqueous NaCl. Are the products different in the two cases? Yes. They are. So firstly, whenever electrolysis happens, it can happen either in the molten or fused state or in the aqueous solution only. Electrolysis solid substances का नहीं हो सकता because they don't have free Electrons. ना. Ions. Free ions. The electrolysis works on the mechanism of transfer of ions to the electrodes. मतलब यहाँ पर free ions होने जरूरी है, बराबर?
तो सबसे पहली बात, electrolysis of substances can take place in molten or fused state or in the aqueous solution only. Now, the products of molten and aqueous NaCl are different because in case of molten NaCl, the ions which we have is Na plus and Cl minus only. Na plus and Cl minus only. But when we have this same substance dissolved in water, we have H plus plus C plus H plus OH minus. So here the water का ions would also be present. ठीक है. अब let's understand the electrolysis product of molten NaCl. So हमेशा एक flow याद रखो that when you supply electrical energy, the substance breaks down into ions. Now the cation moves to, cation भागेगा Cathode. cathode की तरफ. And since the cation is positive, the cathode has to be. Negative. Negative. So we know that cathode is a negatively charged electrode. अब cathode पे हमेशा क्या होता है? Reduction. And that's famously called CR. cathodic reduction. ठीक है. अब reduction is loss या gain? Gain of Gain of electron. electron. Gain of electron. So the flow is quite simple. Cation moves to cathode. Cathode is negative, undergoes reduction, and reduction is gain of electron. So the Na plus in the molten or the fused state will gain an electron and will discharge. Charge चला जाएगा तो उसको बोलते हैं discharge to form the molten sodium at the cathode. ठीक है. Similarly, anion भागेगा Anode. एनोड की तरफ. अनायन नेगेटिव है इसीलिए एनोड शुड बी अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. एंड एनोड पे होगा Oxidation. एंड ऑक्सीडेशन Okay. इज Loss. Loss of electron. तो Cl माइनस विल लूज द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्लोरीन डिस्चार्ज हो गया, बट क्लोरीन इन इट्स एटॉमिक स्टेट डजंट एग्जिस्ट. So 2Cl minus will lose 2 electrons and the 2 chlorine atoms would be Two. existing as a Cl2 molecule, which will be evolved as a greenish yellow gas. Yellow. So finally, when the electrolysis of molten NaCl is done, we have sodium at the cathode and the chlorine gas at the anode. ठीक है. Now we come to the aqueous NaCl. In case of aqueous NaCl, we have multiple ions, that is Na plus H plus in cations and Cl minus and OH minus in anions. अब जब multiple ions होते हैं, they all don't get discharged. तो कौन discharge होगा? That is decided by a concept of discharge potential. Which ion will undergo the discharge is decided by discharge potential. ठीक है. अब Na plus versus H plus में which has a tendency to undergo fast H discharge? plus. H plus. plus. ठीक है. तो यहाँ पर Na plus और H plus में competition होगा, तो H plus will win and it will migrate towards the cathode. Same funda, it will undergo reduction, and reduction in this case will give you the hydrogen gas liberated at the cathode. So balance करेंगे 2H plus and will gain 2 electrons. अब anions में Cl minus versus OH minus, which will undergo discharge? Cl. Cl minus. ठीक है. तो अनायन में Cl minus जाएगा एनोड की तरफ. एनोड is a positive electrode, will undergo oxidation, and the same process will happen wherein 2Cl minus in its aqueous solution will lose 2 electrons to liberate a greenish yellow gas at the anode. ठीक है. समझ में आ गया? So firstly, the electrolysis of molten and aqueous salts, the products may or may not be same. May or may not. ठीक है. अब if I talk about the general summary, which salts will have the product at the cathode
not the hydrogen gas but the metal. कौन से ऐसे salts है जिसका product would be a metal? Copper, silver, gold, mercury. Correct. Generally जो noble metals होते हैं उनका reduction करने का tendency is much higher in comparison to the H plus ion. और वो cations कौन कौन से हैं? सारे noble metal के cations. noble metals मतलब हमें पता है silver, gold, copper, mercury, platinum, ये सारे जो metals हैं उनका डिस्चार्ज करने का टेंडेंसी H प्लस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो कटायंस की लिस्ट में अगर हम H प्लस से ज्यादा वाले टेंडेंसी के कटायंस को याद रखें तो इन जनरल जस्ट रिमेंबर द नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स और कौन कौन से हैं? वी हैव Ag प्लस, क्यूप्रिक, Au3 plus, aurum, mercurous and mercuric, तो Hg2 plus, and even the platinum with 4 plus. ये इसका टाइम्स है. ठीक है, तो इनके कोई भी सॉल्ट्स होंगे तो देयर विल ऑलवेज बी द डिपोजिशन ऑफ मेटल. Clear on that? And then now when we talk about anions, तो anions में मैंने एक सिंपल समरी दिया था. Anions. When you have the anions of, pardon? OH is the least. Least means It Will discharge the discharge last. is the last, yeah. in comparison to any anion. Any anion, almost every. No. Only when there is Cl minus versus OH minus, the Cl minus dominates or discharges, and the product here will be chlorine gas. But when you have OH minus versus the other anions में कौन कौन आ जाता है? Commonly nitrate, sulfate, phosphate. तो इस केसेस में the product is always the oxygen gas. In fact, ऐसे याद रखना है कि OH minus wins in almost or dominates in almost all the cases except for the halides, that is chloride in general. Is that clear? Yes. So now a simple summary to wrap up this. Salts में if electrolysis is done, the products at the cathode and anode are to be found. So if I take the aqueous solution of silver sulfate, so how do you think about this? First of all, the ions in this salt are 2Ag plus 4. I don't want the stoichiometry. I just want the cations. Ag, SO4 minus 2, minus H 2. plus OH minus. minus. So now think about the dominance. Ag plus Cat. versus H plus. Ag. Ag plus. Ag plus. So Metal. Ag would be the product, metal. And sulfate versus OH minus. Oxygen gas. Shut down. Oxygen. That's it. This is the answer. The electrolysis of aqueous Ag2SO4 gives silver at the cathode and oxygen at the anode. Okay. If I have aqueous Cu3PO4 twice, cupric phosphate. Tell me the products. Copper, Cu metal, plus 2. and oxygen gas. Oxygen. अच्छा ओके हाँ and oxygen gas. आयंस नहीं, अभी डायरेक्टली अगर आपको आंसर करना है तो सिंपल है ना. कॉपर वर्सेस H प्लस में कॉपर विल विन. फॉस्फेट वर्सेस OH माइनस में OH माइनस विल विन. OH. समझा? If you have aqueous solution of HgCl2, Hg and Hg chlorine and Cl2. Cl2. now Hg and Cl2. So anode में most commonly the products would be oxygen or chlorine, and cathode में it would be either the metal or the hydrogen gas.
अब कौन से केसेस में what would be the products? This is a simple list to understand. Clear? Yes. Yes. Okay. After this, we had the concept of conductivity. And इस concept तक आने के लिए first I discuss the concept of conductance. So what is conductance? Inverse of Inverse resistance. of resistance. Inverse of Or resistance. resistance. Yes. And how is resistance related with the length and area? R is equal Length to direct L by and A. 2L by It's proportional to the length and inversely proportional to the reciprocal area. to And that's why we have a relation of R equal to rho L by A, where rho is called as resistivity. resistivity, also called as Specific resistance. Specific resistance. resistivity, or very important name, specific resistance. What would be the resistive. unit? Ohm meter. Ohm meter square by Meter. ohm meter. Ohm meter. It's simply R into A by L, ना? So R का unit होगा ohm and A by L का होगा meter. So ohm meter. या फिर commonly smaller values की बात करें तो ohm centimeter. अगर SI unit बात करते हैं तो ohm meter and the common unit would be ohm centimeter. So now from the resistance we have the reciprocal relation which gives you conductance, and the conductance now will be proportional to the area and inverse to the length. So now the Yes, sir. relation which we get is K. G equal to K A by L. Now the K is called as Conductivity. Conductivity. and also called as Specific Specific conductance. specific conductance. So Conductance. conductance जो होता है वो G से indicate करते हैं. Specific conductance जो है वो हम K से indicate करते हैं. Just conductance is G, specific conductance is K. ठीक है? And the unit of K is Per ohm per meter. ulta of this. So K would be ohm inverse, meter inverse. Now ohm inverse is also called C. Siemens per meter हो जाएगा, या फिर we also write it as mho per meter. These are the units. ठीक है? Now the resistance का concept is generally applied to the metallic wires which can conduct electricity, and the concept of conductance and conductivity is generally applied to solutions where the electricity is conducted by the way of transfer of ions. Correct? Resistance का concept is generally applied for the metallic wires, and conductance and conductivity का concept is applied to solutions. ठीक है? तो wires में जो electricity conduct होता है that is via flow of resistances में Electrons and mobile Elec- ions. So elect- flow of mobile electrons, and solutions में the conduction is due to Of of ions. the ions. flow of ions. Clear? So this was basic idea about resistance and conductance. Now conductivity के बाद we have the term of molar conductivity. Molar conductivity, which is indicated by Lambda. Lambda m. lambda m. We call it as lambda but indicated as ulta v और m लिखते हैं. बराबर? How is molar conductivity related with K? directly proportional. Direct. And what is the relation? K by C. C. लैम्बडा m इक्वल टू k बाय c. तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि मान लो आपके पास तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं. Solution 1 of NaCl, let's say, solution 2 of KCl, and solution 3 of HCl. ठीक है? तो the conductivities of these three solutions would be different.
But if I want to normalize the conductivities of the three solution, then I need to maintain some parameter which is constant. So that parameter here decided is the concentration. So let's say now I have 1 molar solution of NaCl, KCl and HCl each. So now I measure the conductivity. The conductivity which I get would be per unit molar concentration. So that is called molar conductivity in simple terms. So can you repeat? The conductivity measured per unit molar concentration of the solution is called molar conductivity. मतलब अगर आपके पास 3 solution है, solution 1, solution 2, solution 3, ठीक है? If the concentrations are different, the conductivities are going to be different. But अगर हमें compare करना है कि किसका conductivity ज़्यादा है, किसका कम, तो comparison करने के लिए we require some parameter. An example दिया था कि let's say you want to compare two persons. तो compare करने के लिए बहुत सारे features है, aspects है. But if I tell you to compare the eyes, so the comparison is made on some parameter. Let's say eyes, let's say mouth, let's say height, let's say weight. So compare करने के लिए कोई तो एक पैरामीटर होना चाहिए. तो यहाँ पर जो पैरामीटर हम यूज करते हैं that is concentration. तो हम क्या करते हैं, सब सोल्यूशन का concentration सेम कर लेते हैं और अब जब कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे तो that comparable conductivity is simply called molar conductivity. So the conductivity measured per unit molar concentration is called molar conductivity. Now the units of this is very, very important. So firstly, what is the unit of K? Ohm inverse, meter inverse. K का यूनिट तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स है, ठीक है. अब अगर मैं SI यूनिट की बात कर रहा हूं तो दिस इज ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स. K का यूनिट क्या होता है? Mole upon mole unit. Molar, per dm mole per liter. मोलार या फिर मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है. बट अगर मैं SI यूनिट पूछूं आपसे तो इट विल बी मोल. Liter inverse. हाँ, SI unit is not liter inverse. DM cube is not SI unit. It will be mole per meter cube, not DM cube or CM cube. मैं SI unit पूछ रहा हूँ आपसे. Concentration will be mole per meter cube. तो उससे lambda m का यूनिट अगर बैलेंस ऑफ करोगे तो क्या आता है? Siemens मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बराबर. But generally the concentration is not measured in this unit. We know that it is measured in mole per centimeter. ना. Generally बाबा mole per dm cube होता है ना, DM. Yes, Yes. sir. because it's a volume measured in liters. सुनो ध्यान से, lambda m equal to k by c में if I apply the SI units, k will be in Siemens per meter, concentration will be in mole per meter cube, and through that lambda m होना चाहिए Siemens meter square per mole. अगर क्वेश्चन में SI यूनिट पूछा है तो lambda m का यही यूनिट होगा, ठीक है. बट इफ आई टॉक अबाउट कॉमन यूनिट्स देन lambda m, k और c के कॉमनली यूज्ड यूनिट्स क्या है? Siemens per centimeter for k, mole per dm cube for concentration, ठीक है. तो इसके थ्रू अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो वी हैव टू बैलेंस इट बाय अ मल्टीपल ऑफ 1000. 2000 because this dm cube need to be converted into centimeter relation, na everyone? Yes, sir. And I hope you know that 1 dm cube is 10 raised to 3 cm cube. तो ये जो 10 raised to 3 है, that is to convert the dm cube into cm, centimeter cube, and then when we balance of the units, the common unit of molar conductivity comes out to be Siemens centimeter square per mole. Am I clear on this? Yes. Lambda m equal to 1000 k by c is the formula which we are going to commonly apply with the commonly mentioned unit in the question.
क्वेश्चन में यूनिट को पहले ध्यान से देखना. Is K given in Siemens per centimeter and concentration in mole per dm cube? Then you can definitely use this direct relation of 1000 K by C, and the final unit of the molar conductivity would be Siemens centimeter square per mole. Clear? Yes, sir. The next part was quite important, and in that the first part was the relation between K and concentration. How was it related? Tell me the conclusion first. Inverse. It was inverse. No. Direct. Direct. Directly Direct. direct. Theoretically, it should have been inverse. Inverse. But practically, it is found to be direct. अब concept क्या था? जब भी कोई solution को हम dilute करते हैं, when we add water, what happens to its breakdown? Does it ionize more or less? More. 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 And this is understood by Ostwald's dilution law. Ostwald's dilution law क्या बोलता है? That the degree of dissociation of an electrolyte is inversely proportional to the square root of concentration or directly proportional to the square root of dilution. And this is obtained from alpha equal to square root of K by C relation, जो equilibrium में derive कर चुके हैं. If you know, well and good. Otherwise, remember that alpha is equal to root of K by C. तो इससे क्या समझता है कि as we increase the dilution, the alpha increases, and it is quite practical to understand that when you dilute the solution, the substance will break down more, and because of that, the ionization will be more. So degree of ionization या dissociation बढ़ता है, right? Yes, sir. Correct. So अगर degree of ionization बढ़ेगा तो उसका conduction, which is due to the flow of ions, will Increase. increase. तो obviously यहाँ पर conductivity का relation concentration से inverse होना चाहिए, but ऐसा नहीं था. क्यों नहीं था? उसके लिए let's go back to the relation of K. तो हमें पता है G is equal to K into A by L. G is equal to K into A by L. तो K उससे क्या हो जाएगा? Yes, GL sir. by A. G into L by Directly A. proportional. Yes, sir. बराबर. अब Yes, sir. अगर मैं किसी solution में the distance between the electrodes यानी L को per unit length और area को per unit area consider कर लेता हूँ. If my length and A are unity, then K is equal to G. A will K is become equal equal to G. G मतलब the conductivity of a solution is equals to conductance. is equal to the conductance for the unit length and unit area. अब जब unit length और unit area होगा यानी volume भी Same होगा. Unit. unity होगा, Yes, sir. volume भी unity होगा. तो simple definition में हम क्या बोलते हैं? Conductivity is the conductance of the ions present in one One. unit cm volume. Conductivity is the conductance. ये सिर्फ उन्हीं ions का conductance consider करता है which is present in Same cube of solution. 1 cm cube of the solution. यानी per unit volume में जितने ions हैं हम उन्हीं का conductance जब measure करेंगे then we get the conductivity of the solution, meaning the conductivity is not of all the ions present in the solution, it's only the ions which are present in unit volume. समझा? Yeah. Yes or no? Yes.
Yes. मैंने sir. एक टेब्यूलर फॉर्म में रिलेशन दिया था कि लेट्स से आई हैव अ वॉल्यूम ऑफ 100 cm क्यूब, उसमें मान लेते हैं मेरे पास नंबर ऑफ आयंस जो है वो 6 into 10⁻16 है, hypothetical value. But is the conductivity related to these ions present in 100 cm cube? No. 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 Per volume. Per unit. So per unit volume का consideration करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं number of ions per cm cube. तो 100 cm cube में इतना है, तो 1 cm cube में हो जाएगा 6 into 10⁻14. 14. ठीक है. अब let's say I dilute the solution 10 times. So when I dilute it by 10 times, the 1000. solution का volume becomes 1000 cm cube. ठीक है. अब जितना dilution करेंगे उतना ions बढ़ना चाहिए. मतलब अगर ideally देखें तो 6 into 10⁻16 on dilution 10 times should become 6 into 10⁻17. 6 into 10⁻17 होना चाहिए. But actually क्या होता चाहिए. है, when the volume is diluted 10 times, the number of ions do not increase proportionately. It will increase 10 times. definitely, Yes, but 6 it times. might increase 6 times, 7 times, 8 times. तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि 6 times बढ़ेगा तो ये हो जाएगा let's say 36 into 10⁻16. Yes, sir. तो per cm cube की अगर बात करें तो it will become 36 into 10⁻13, 14. which is equal to 3.6 into 10⁻14. पावर कॉमन ले लिया है. Yes, sir. तो अब ऑब्जर्वेशन क्या है, when the volume is diluted 10 times, the number of ions do not increase 10 times. In fact, per cm cube, the number of ions are actually decreasing. And अगर वो decrease हो रहा है, मतलब the conductance will also Will decrease. decrease, which Decrease. in turn will decrease the K. Conductivity. हाँ. इसीलिए रिलेशन क्या आया, that K is inversely proportional to Dilution. the dilution, Proportional and that's dilution. why it is Dilution. directly proportional to the concentration. So conductance, concentration. Clear? Conductivity is inverse to dilution and directly proportional to concentration. Then the relation of lambda m versus concentration was discussed. So this is as per the formula itself. We know that lambda m is equal to 1000 K by 1000 C. K by. ठीक है. अब इससे if I consider the conductivity to be same, then the molar conductivity Inversely. Inverse. is inverse to the concentration or directly proportional to the dilution. Dilution. Now this is understandable because the molar conductivity is the conductance of ions which is present in 1 mole of the solution. And 1 mole of the solution matlab we are talking about huge number of ions. 6 into 10⁻23 ions की बात कर रहे हैं. So that's why we can say that this is almost covering the entire solution. तो अब हमने जो पहले डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन में जब डाइल्यूशन करते हैं तो उसके आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए. ठीक है. तो वो कंडक्टिविटी नहीं होता है जो डायरेक्टली डाइल्यूशन से बढ़ता है. दैट इज व्हाट? Molar conductivity. मोलर Molar कंडक्टिविटी. conductivity. दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. समझा? अब इसी रिलेशन से आई केम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ called Ulrich law of infinite dilution. अब कॉन्सेप्ट सिंपल है, सुनो. lambda m, now we know that it is directly proportional to dilution. So as the dilution increases, the lambda m will
Increase. इंक्रीज। तो डाइल्यूट मैं और ज्यादा करते जाऊंगा तो लैम्बडा एम और बढ़ेगा, और डाइल्यूट करूंगा तो इट विल इंक्रीज फर्दर, but on increasing the dilution the lambda m will achieve some threshold value, because एक बार वो सब्सटेंस completely टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, आयोनाइज हो गया, तो फर्दर डाइल्यूशन will have no effect on the ionization. Yes or no? Yeah. Yes, sir. So जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर लेते हैं, then the molar conductivity which we achieve, which is called Threshold. the threshold value, is called the molar conductivity Lambda at infinite dilution, और उसको हम लिखते हैं lambda m naught. Not. Naught का मतलब हुआ At infinity. at zero Dilution. concentration. Okay. Infinite dilution मतलब zero concentration, Concentration. Yeah. इसीलिए नॉट का मतलब होता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन. लैम्बडा एम इंफिनिटी भी लिखते हैं, लैम्बडा एम नॉट भी लिखते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल. नॉट लिखा तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलना है, इनफाइनाइट लिखा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलना है. तो कोलरॉच ने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड we get the ions completely broken down. So now the cation and anion will migrate independent to each other, cathode and anode, sir. and each of the ion will contribute individually to the molar conductivity. इसलिए at infinite dilution the molar conductivity is equal to sum of the Lambda m of cation lambda naught of cation and the Yes, molar lambda conductivity m. contributed by the anion. anion. समझा? Yes, sir. उसके बाद एक रिलेशन बताया था that if I talk about lambda m for a weak electrolyte and strong electrolyte, so how are they related? First of all एक रिलेशन दिया था lambda m और concentration का. lambda m नहीं, एक इक्वेशन दिया था रादर. lambda m naught minus a under root of c. Very good. Lambda m is lambda m naught minus a root of c, and this relation was called Debye-Huckel Debye-Huckel Onsager. Onsager. Debye-Huckel-Onsager equation. ठीक है. इस इक्वेशन से अगर मैथमेटिकली इफ आई ट्राई टू प्लॉट अ रिलेशन ऑफ lambda m versus root of c, then this is of the type y I equal is to equals to mx plus c. mx plus c. Yes, sir. तो इसमें we are getting a slope which is Slope negative, minus a. So graph means मतलब it will have a decreasing slope, and Yes, the sir. y-intercept here would be equal lambda m naught. to lambda m naught, which is the molar conductivity at infinite dilution. Infinite dilution. Dilution. या फिर अगर concentration की बात करो तो ये zero concentration हो गया. Yes, sir. Now ये जो relation मिलता है, this is true for what type of electrolyte? Strong Strong electrolyte. electrolyte. This is for the strong electrolyte. But यही Weak चीज अगर electrolyte is weak electrolyte के लिए बात करें तो Exponentially तब decreasing. dissociate नहीं Exponentially होगा. decrease. exponentially decrease होता है, कुछ ऐसा. ये weak electrolytes के लिए है. मतलब weak electrolyte के लिए to achieve the lambda m naught value is practically impossible. मतलब practically we could not find the lambda m naught, meaning the molar conductivity at infinite dilution for the weak electrolytes. So through the Kulrosh equation we can find the weak electrolyte का lambda m naught using Strong strong electrolyte. electrolytes. तो जैसे अगर मुझे lambda m naught of acetic acid find out करना है, तो फिर And I can use the lambda m naught of some Sodium strong acetate. Sodium acetate. Sodium acetate then and sodium chloride. Sodium chloride. HCl SHCl. Minus. NaCl. NaCl. तो इन तीनों का तो lambda m Yes, naught की minus. वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं.
Yes, sir. So using Plus these minus. 3 strong electrolytes, I can find the lambda m naught of this weak electrolyte, and the relation would be acetate plus HCl minus NaCl. Minus NaCl. This is the application of Kohlrausch law. Yes, sir. Clear? And then through the Kohlrausch law only, there were 2 relations which are given formula based. Alpha, we can find the degree of dissociation of a weak electrolyte using a ratio of Alpha Alpha m by is alpha lambda m naught. upon lambda m upon naught. lambda m by Lambda lambda Naught. m naught. So if you have the molar conductivity at any concentration and the molar conductivity at 0 concentration, then the ratio of that gives you the degree of dissociation. And through the degree of dissociation, we can find the dissociation constant of acid or a base, जिसको हम Ka या Kb से indicate करते हैं. And that relation was alpha square C upon 1 minus alpha. 1 minus alpha. sorry अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा. और यही है आपका ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ. ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ. क्लियर? समझा? Yes, sir. डाउट्स भी पूछते जाओ आप. There on we move to the concept of cell constant for a standard conductivity cell. Standard conductivity cell. एक स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी सेल जो होता है उसमें the distance between the electrodes, that is the length, and the area of cross section of the electrodes, that is A, remains constant. स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी सेल में डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो L होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स जो A होता है, irrespective of whatever type of electrolyte you use in that will be a constant. So that ratio of length by the area is called as the cell constant, indicated by letter B. B. So the cell constant is given as ratio of L by A and the unit is L by A का unit Meter is inverse. या फिर commonly centimeter inverse. Now through this relation we can find out the resistance of the conductivity cell. So वो relation हमें क्या मिलता है? B is equal to K into R. Bekar. So this Bekar relation is very important because it can give you the relation between the resistance and the conductivity. बराबर? तो एक तो मेथड है कि बेकार से आप फाइंड आउट कर लो रेजिस्टेंस को. दूसरा मेथड था यूजिंग Wheatstone bridge. तो उसमें when the galvanometer would show null pointer deflection, we say the Wheatstone bridge is balanced. और जब वो बैलेंस होता है, the ratio of the resistances, एक known resistance है, let's say Rx, और जो unknown है, that is for the solution जिसका हमें resistance find करना है, that would be equal to the length का distribution where the galvanometer will show the zero deflection. So let's say वो AC और BC का point है. मतलब we have the length 100 centimeter of the wire and the null pointer deflection is coming at C, then it will be the ratio of length of AC to the length of BC. और ये relation से भी हम resistance of the solution find out कर सकते हैं. ये दोनों concept क्या है? It is used to find the resistance of the solution or of the conductivity cell. ठीक है?
Clear? Yes, sir. So after the cell constant, there comes the concept of Faraday's laws of electrolysis. How many laws were there? 2. 2 laws. What does the first law talk about? Weight of the Weight of either the metal deposited or the gas liberated at the electrode is always proportional to the charge. charge Amount of which is passed through the electrolyte. The weight of the metal deposited or the gas liberated at the electrode is directly proportional to the charge passed. But then the charge is the product of IT. I current in ampere and the time in seconds. तो ये था रिलेशन ऑफ द फेराडेज फर्स्ट लॉ. फिर 4 स्टेप मेथड से उस वेट को हमने एक्चुअली फाइंड आउट किया था. तो मैं वो 4 स्टेप वाइज बताता हूँ और उसके बाद वी विल जस्ट कम टू द फॉर्मूला. So firstly we know that it's proportional to the charge. So we take the product of current and time. This is the quantity of electricity which is passed to the electrolyte. Then this quantity of charge is divided by 96500. 96,500, which is 1 Faraday of electricity. अच्छा ये कैसे आया वैल्यू वो पता है? यस और नो तो बोलो. No, sir. No, sir. Now when we write H plus is gaining an electron to form half mole of H2. तो यहाँ पर अगर हम इसको moles के थ्रू रीड करें तो can I say 1 mole of H plus gains 1 mole of electron to form half a mole of H2. तो ये 1e माइनस लिखने का मतलब क्या होता है? 1e माइनस इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते 6.23 हैं? into 10 raised to Avogadro's number. एवोगैड्रोस नंबर 6 into 10 raised to 23. एंड एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 1.6. raised to minus 19. That's it. Yes, There sir. you are. When you multiply this, you get a value of 96,500 coulombic charge. तो एक E माइनस लिखने का मतलब 96,500 coulombic चार्ज पास किया गया है और इसी हायर या बिगर यूनिट ऑफ चार्ज को बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज. Farad. इसीलिए 1 फैराडे चार्ज इज 96,500 coulombs. तो कहीं पे 2e माइनस लिखा हो तो वो 2 फैराडे के बराबर यानी ट्वाइस ऑफ दिस coulombic चार्ज. समझा? Yes. So now we know that 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb. 96,500 coulomb. तो IT चार्ज अगर मैंने पास किया IT coulombic चार्ज तो कितना फैराडे होगा? IT by 96,500. There you are. This is the ratio. I into T upon 96500. ये क्या है? फैराडे का चार्ज है. और वही फैराडे का चार्ज आपको क्या देता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड. Yeah. Yes. एक फैराडे का चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है. तो ये x एक्चुअली क्या दे रहा है आपको? द Number of नंबर moles. ऑफ Number of मोल्स moles. ऑफ Electron. Electrons. electrons passed. So if you have IT coulombic charge passed, the number of moles you are passing is IT 96,500. upon 96500. Then you find the Yes, sir. number of moles of the product which is deposited. उसके लिए we multiply by Mole ratio. mole ratio. अब simple way में mole ratio for the cations is equal to the Reciprocal of Inverse of charge. charge. reciprocal of the charge, inverse of charge. यानी Na plus के लिए mole ratio would be 1/1. Cu2 plus के लिए 1/2. half हो by जाएगा.
एंड अल्यूमिनियम 3+ के लिए 1/3. 1/3 हो 3. जाएगा। ठीक है, और अनाइंस के लिए मोल रेशियो फाइंड करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप रिएक्शन लिखो, डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे होगे। मतलब Cl- का 2 moles loses the 2 electrons to form the Cl2 gas. मोल रेशियो का फंडा क्या था? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन द मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पास्ड। मोल रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड, यानी 1 अपॉन द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड। यानी क्लोरीन के लिए भी हम मोल रेशियो 1/2 लेंगे। तो कटाइंस के लिए रेसिप्रोकल ऑफ द चार्ज, अनाइंस के लिए राइट द हाफ रिएक्शन एंड देन फाइंड आउट द मोल रेशियो एज कितना मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट बना अपॉन कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ। सिंपल। Yes, sir. Yes. And then when you multiply this number of moles with the molar mass of the substance, we get the weight Weight of the of. substance which is deposited or liberated. ये है आपका 4 स्टेप रिलेशन। क्लियर? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया था यहाँ पर कि 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सब्सटेंस का liberates or deposits what? Molar mass. No. Equivalent mass. Very good, very good. 1 gram equivalent, that is equivalent mass of ANY, any substance. 1 Faraday electricity liberates or deposits 1 gram equivalent of any substance. ठीक है, मतलब 1 फैराडे चार्ज किसी भी सब्सटेंस का उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर लिबरेट या डिपॉजिट करेगा। जैसे अगर मेरे पास 1 फैराडे चार्ज है तो अल्यूमिनियम का कितना अमाउंट? 9 grams. 9 ग्राम डिपॉजिट करेगा, बिकॉज इट इज मोलर मास अपॉन द एन फैक्टर, एंड अल्यूमिनियम के लिए एन फैक्टर उसके चार्ज के बराबर होता है। सो इट्स 27/3, 1/3 ऑफ द मोलर मास डिपॉजिट करेगा। इसी को तो हम ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. फेरस का कोई कंपाउंड हो तो कितना डिपॉजिट करेगा? 56/2 और 56/2, 28 2. ग्राम्स। लेकिन वही अगर कोई फेरिक सॉल्ट हो तो 56/3. 56/3 का डिपोजिशन होगा। समझा? ऐसा नो, ऑलमोस्ट 19 ग्राम्स के बराबर, ऑलमोस्ट। समझा? सिमिलरली अगर क्यूपरस Yes, sir. होगा तो 63.5/1 आएगा, क्यूपरिक होगा तो 63.5/2 आएगा। और अगर कोई अनाइन की बात करे जैसे Cl-, जिससे क्लोरीन का लिबरेशन होने वाला है, ठीक है, तो इस केस में व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट मास? कितना? 35.5, 35.5. बिकॉज क्लोरीन का मोलर मास 71 होगा Cl2 का, राइट? और उसके Cl- पे चार्ज -1 होता है, बट Cl2 पे टोटल चार्ज -2 होगा, तो उसका जो n फैक्टर लिया जाता है वो हम 2 लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल दिया था स्पेशली 3 गैसेस के लिए, क्विकली 3 कॉमन गैसेस के लिए। व्हाट आर दे? Hydrogen, chlorine, oxygen. H2Cl2O2. H2Cl2O2, these are very important stuff for MCQs and the theoretical question solving. 3 important gases
H2Cl2 and O2. And if I pass the 1 Faraday charge, we know that 1 Faraday electricity liberates 1 gram equivalent of any substance. तो चाहे वो गैस हो या कोई भी सब्सटेंस हो, उसका मास ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा और उसका वॉल्यूम ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर होगा. राइट एवरीवन? Yes, sir. So tell me the values to be filled in these two columns. Hydrogen. 1 Faraday will liberate how much of it? 1 gram. 1 gram. 1 gram equivalent. And volume? 11.2. 11.2 liter. 22.4 का आधा हो जाएगा. That is 11.2 liters. Chlorine के लिए mass 35.5. 25.5. and 11.2 11.2 and historical oxygen mass 8 gram. grams. 8. 16 नहीं है, वही सबसे बड़ा गड़बड़ है. Yes, sir. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन एटम के ऊपर -2 का चार्ज होता है. तो अगर आप दो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंसिडर करते हो -4, यानी जो n फैक्टर हम लेते हैं फॉर दीज गैसेस एक्चुअली इज 2 एंड नॉट 2 One. बट 4 है. 4 ना. Yes, sir. Sorry. तो इसीलिए ये 32 डिवाइड बाय 4 8 देता है और ये 22.4 डिवाइड बाय 4 5.6 लीटर्स देगा. क्लियर? Yes, sir. This table is very important. I hope you all have written this table in the notes. ऐड किया है? Yes, sir. Sir. नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो. ये टेबल आपके बुक में होना चाहिए. इट्स very important. These are the direct values which will help you a lot in solving the MCQs. A lot. Then after the first law we have the Faraday's second law. Now here comes a condition. Second law का condition. Electrolytes should be connected in series. The two electrolytic cells must be connected in series. So when they are connected in series, the weights of the substances deposited or liberated is proportional to Mole ratio. Mole ratio. mole ratio, which in turn finally Polar mass. no. Molar mass से नहीं, equivalent mass से E. related था. Equivalent. W was proportional to E. W was proportional to E. तो अब यहाँ पर two electrolytic cells must be connected in series. So the hint to understand that you have to apply Faraday's second law is the two electrolytic cells must be connected in series. तो मान लो आपके पास Ag2SO4 aqueous solution का एक electrolytic cell है and you have the aqueous solution of NaCl and these two are connected in series. ठीक है? So what is the substance deposited at the cathode in this case? Na plus. Eh? Ag. Ag G. and Ag. O2. Ag at the cathode and O2 at the anode. यहाँ पे H. NaH बड़ी and यानी Cl. कैसे आएगा? H. H and Cl2. and Cl. Cl. H नहीं बोलते हैं. मैं प्रोडक्ट जब पूछता हूँ तो H2 बोलने का. मैं आयन जब पूछता हूँ तो H प्लस बोलने का. प्रोडक्ट इज H2 and Cl2. सो अगर कैथोडिक सब्सटेंसेस की मैं बात करूँ तो as per second law of electrolysis, the ratio of the weights of Ag to the weight of the hydrogen gas is equal to the ratio of equivalent mass of Ag to the equivalent mass of H2. Now we know that equivalent mass of H2 is how much?
1. 1 and Ag का. 108. So this 108. ratio will be 108 upon 1. So knowing the weight of either of the two substances, we can find the weight of other substance which is liberated or deposited. This is the application of Faraday's second law. Second law, yes, sir. समझा? Yes, sir. Yes, sir. And एक और relation यहाँ से important था, E equal to F into Z, where E is your equivalent mass, F is the Faraday's charge, and Z is called Electrochemical equivalent. electrochemical equivalent. ठीक है? And इसका unit क्या था? देखो यहां से क्या आता है, Z is equal to E by F. So Z is what exactly? Pardon? So Z, Z what? what is Z exactly? That's what I'm explaining. Z is first of all E by F. मतलब Z जो है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं. तो एक एग्जांपल देता हूं. मान लो I want to find the Z for the H2. So it's equivalent mass of the H2 divided by Faraday, यानी 96,500 coulomb. So the equivalent mass is 1 gram of hydrogen divided by 96,500 coulomb. Yes or no? So the amount of substance which is deposited or liberated when 1 coulombic charge is passed is called its electrochemical equivalent. जो substance deposited होता है for 1 coulombic charge, that is called electrochemical equivalent. See, मैंने एक टेबल भी दिया था. मैं चार्ज वर्सेस मास का एक टेबल अगर कंसिडर करूं तो एक फेराडे चार्ज पास करने पर कितना मास डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है? क्विक. एक फेराडे चार्ज के लिए वी नो दैट इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा. यस और नो एवरीवन? तो एक फेराडे के लिए इक्विवेलेंट मास के बराबर है, तो एक कुलम्बिक चार्ज के लिए इक्विवेलेंट मास अपॉन द फेराडे का मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा. उसी E by F रेशियो को एक नाम दे दिया है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विच इज नथिंग बट Z. सिंपल. यस और नो? अरे Yes. So this is just equivalent mass in coulombic Coulombs. charge का. करेक्ट. ये पर फेराडे होता unit. है और ये पर कुलम्बिक होता है, बस. इसीलिए तो EC का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर कुलम. और E का यूनिट क्या होगा? ग्राम पर फेराडे ना. Yes, sir. तो द अमाउंट पर फेराडे चार्ज इज इक्विवेलेंट मास. अब इक्विवेलेंट मास को ही यहाँ पर केमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, तो ये इसको CE बोलते हैं, CE, और इसको ECE बोलते हैं. The equivalent mass is called chemical equivalent and the Z is called electrochemical equivalent per coulombic charge का mass. Clear? Yes, sir. So that's about the Faraday's second law. So till here we complete with electrolysis. कुछ डाउट यहाँ तक? Any doubt? Molar ratio into the molar mass is always equivalent mass. Yes. Why? Because equivalent mass होता क्या है? It is molar mass upon the N factor. n factor. और किसी भी सब्सटेंस का n फैक्टर उसके मोल रेशियो से उल्टा होता है. n फैक्टर और मोल रेशियो उल्टा होता है. इसीलिए तो हमने बोला कि मोलर मास इनटू द मोल रेशियो इज नथिंग बट इक्विवेलेंट मास, राइट? Can you go back 1 second?
So out here, what is like W is equal to Z into Q? That is Faraday's first law, ना? Yeah. ये देखो, And मोल रेशियो इनटू मोलर मास. टेल मी, अभी मैंने क्या बोला? मोल रेशियो इनटू मोलर मास. equivalent. एंड इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे क्या था? E by F. क्या था? E by F. By F is equivalent. वो भी इक्विवेलेंट मास. Z. ये Z, देखो, Z. E by F दिखा इधर, E by F इक्वल टू Z दिखा. हाँ. तो अब मोल रेशियो इनटू मोलर मास इज E and upon F is Z. That's why can I say W is equal to ZIT? Yeah. ये मॉडिफाइड वर्जन है फर्स्ट लॉ का, Yes. आया यहीं से. So this W is equal to F into Z is the second law. Yeah. What Because are you saying see, about n factor? सी सेकेंड लॉ जो है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट सीरीज कर रहे में हैं. कनेक्ट करते हैं. अब सीरीज में कनेक्ट करने पर बताओ मुझे, आईटी जो है वो तो सेम कांस्टेंट रहेगा. अपॉन 96500 भी, कांस्टेंट रहेगा. मतलब W किससे प्रोपोर्शनल होगा? मोल रेशियो इनटू मोलर मास. ई से. और वही तो E है, इसीलिए तो मैंने फेराडे सेकेंड लॉ को क्या बोला? W is proportional to E. Second law is nothing but the modified version of first law only by keeping the charge to be same. सर अभी क्या हुआ? n फैक्टर हम क्या बोला था अभी? n फैक्टर जो है ना वो मोल रेशियो का इनवर्स होता है. हम n फैक्टर एल्यूमिनियम के लिए क्या लेते हैं? व्हाट इज द n फैक्टर फॉर एल्यूमिनियम? 3. 3. And what is the mole ratio of aluminium? 1/3. So can I say n factor and mole ratio are ulta of each other? Yes, sir. बस वही बोला Yes, मैंने. ठीक है. सर और नोट्स में जो रेशियो दिया है, द मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड अपॉन मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड, तो सर हाउ इज दैट रिलेशन कमिंग? लाइक वो सी वहां पे सेकेंड लॉ क्या दिया है, दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच इज डिपॉजिटेड is proportional to its mole ratio, right? यस सर. Now number of moles is given mass upon the molar mass. Yes, sir. So this in turn is proportional, the weight is proportional to molar mass into mole ratio. Now what is molar mass into mole ratio? E. So W is proportional to E. Matlab through W proportional to E, I can also say that the moles is proportional to the mole ratio. Isn't it one and the same? Yes, sir. Same relation. Got it? Yes, sir. Just a second. आवाज मत करो, लेक्चर चालू है. Hello. Yes, sir. Yes. So now moving on to the next section, that is of electrochemical or galvanic or voltaic cells. तो उसमें first was the discussion about Daniell cell. तो एक ही Daniell cell के through you can understand how is a galvanic cell set up or connected. तो क्या क्या होना चाहिए galvanic cell के लिए? How was Daniell cell set up? Zinc and copper. So it was made up of two half cells. Yeah. One is called zinc half cell, other is called copper half cell. Which will be selected as cathode and anode? How do we decide? Zinc versus copper, which was selected as cathode and which was selected as anode? Zinc was Selected as anode. Anode. And copper was selected as the cathode. And why? Cathode. Why? Oxidation was taking place at the zinc.
Zn, the Zn used to lose through two electrons to form Zn plus 2. Perfect. So this is basically as per the reactivity series only. We know that zinc is more reactive than copper. आपने 10th में एक reactivity या activity series पढ़ा था. So उसमें we know that zinc is more active than copper. What other change? Yes or no? Yes. So with zinc more active than copper, we understand that zinc undergoes oxidation and copper undergoes reduction. And that's why the zinc will be selected as the anode and the copper will be selected as the cathode. So Daniell cell जो है, that's made up of zinc half cell and the copper half cell. The two electrodes are connected through a simple metallic wire and the solutions are of ZnSO4 and CuSO4. A mechanism simple है, when zinc and copper are connected together, then zinc will have the tendency to lose Two electrons. 2 electrons and undergo Oxidation. oxidation. So this particular reaction was called oxidation half reaction, Reaction. OHR. Yes or no? Now these 2 electrons will migrate towards the cathode Cathode. and will Yes. undergo, Reduction. so that is called reduction half reaction. Yes, sir. So there the copper ions from the solution will gain 2 electrons and will deposit as Cu. So that's why here we say that the anode is the zinc wala half cell and the cathode is the copper wala half cell. What about the polarity of the anode and cathode here? Polarity. Anode is negative. Negative. Anode is Cathode is negative. 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 Why? Cathode is क्योंकि जो positive. electrons यहाँ lose हो रहे हैं, that will get transferred through the metallic wire into the copper half cell. Yes, sir. So, And when the metal loses electron, the negative charge is present on the electrode. So that's the reason anode becomes a negative and cathode becomes a positive electrode, right? And these polarities are ulta of what we observe in electrolytic cells. Clear? yes, sir. Now in दोनों half cells को जब हम add up करेंगे तो we'll get the net cell reaction. और उस net cell reaction में the 2 electrons which are lost will be gained over here. तभी तो redox balance होगा. So the zinc solid added with copper plus 2 aqueous will give Zn2 plus aqueous and copper solid. इसको बोलते हैं net cell reaction. ठीक है? Now after writing the net cell reaction, we have discussed about the cell formulation, also called cell representation. So there were some rules which are used to represent a galvanic cell in a simple manner. What were the rules? Anode will be on the left and Anode is always written on the left and cathode on the right. Perfect. Next. Direct contact is Direct indicated contact. by single line. Single vertical line indicates a direct contact. Double vertical line, Salt bridge. indirect contact, and that is nothing but the salt bridge. ठीक है, तो यहाँ पर Daniell cell को if I want to represent, we know that zinc is dipped in a solution of its own ions. What is this type of half cell called? 4 टाइप के half cells. तो ये metal ion का half cell है. ठीक है, then this zinc ions was indirectly connected by salt bridge with the copper ions in the copper half cell, and that was in contact with the copper electrode. ठीक है, and the zinc is a negatively charged electrode, copper is the positively charged electrode. The electrons here flow from Anode to cathode.
the electrons will flow from anode to cathode in the external circuit. In the external circuit, and the current will be Current will conventional flow current opposite. will flow from the cathode to And anode like this. ठीक है? Now if I say the standard galvanic cell, the standard condition में the concentration of the solution should be 1 molar, 1 molar. 1 molar, the Molar. pressure should be 1 1 atmosphere, 1 1 atmosphere. atmosphere. 1 atmosphere, and the temperature should be maintained at 25 degrees. 298 298 Kelvin. Kelvin. Under those standard conditions, the standard EMF of the cell is calculated by what formula? E naught reduction plus oxidation. E naught reduction plus E naught oxidation. But ये हम direct use नहीं करेंगे because conventionally we have all the potentials Reduction as potential. the reduction potential. Now for any electrode, the oxidation potential and the reduction potential are equal in Magnitude Equal in magnitude. but opposite in sign. sign. So the reduction happens at the cathode and the oxidation happens at the anode. ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर लिखे E naught of the cell in terms of reduction potential, तो हमें मिलेगा E naught of reduction at cathode minus E naught Minus the of reduction reduction at anode. the anode. या फिर conventionally हम ये भी लिख सकते हैं it's E naught of the reduction at the right hand electrode RHE minus E naught of the reduction of the left hand electrode. तो अगर आपके पास सेल का फॉर्मुलेशन है इस तरह से तो आप सिंपली क्या बोलोगे? राइट माइनस लेफ्ट. क्या बोलोगे? Right minus left. Right minus left. So this is how you find the standard EMF of the cell. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर कंडीशंस नॉन स्टैंडर्ड हुई तो the EMF will not be equal to E naught. In that case, we need to find the EMF called non-standard EMF, and here we use the which equation? Nernst equation. Nernst equation. The most important part of the chapter is the Nernst equation. So Nernst equation कैसे लिखते हैं? E of the cell under non-standard condition is equal to not E naught of the cell minus 2.303 into RT upon NF into the log to the base 10 M M. Yeah. Only Q, you can write QC also. QC. QC is the reaction quotient, which in turn is given as concentration of the products to the concentration of the reactants raised to the power equal to their Coefficient. stoichiometric coefficient. बराबर. तो this is nothing but the reaction quotient का ratio only. इसीलिए इस particular ratio को हम QC भी लिख सकते हैं. अब स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम कंसिडर करते हैं तो 2.303 R, T और F ये तो सब कांस्टेंट है, और जब इन्हीं कांस्टेंट्स को हम सॉल्व करते हैं वी गेट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 0.0592 अपॉन N into log to the base 10 QC. Clear? समझा? Yes, sir. Previous slide. लास्टली एक एग्जांपल मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन का बताता हूं, उसमें वी विल अंडरस्टैंड ऑल द एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स. ठीक है? लेट्स से आई वांट टू प्रिपेयर अ सेल ऑफ सिल्वर एंड क्लोरीन. ना कोई भी हाफ सेल्स जब हम फॉर्मुलेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, it has to be represented in the form of reduction only.
तो हम मेटल मेटल आयन का हाफ सेल जब रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन में आई विल राइट Ag plus first followed by Ag. Why? Because I know that Ag plus का रिडक्शन Ag देता है, right? Yes. Yes, sir. Yes. एंड क्लोरीन के लिए शुड आई राइट Cl नेगेटिव टू Cl2 या Cl2 in contact with Cl minus? What should be correct? Cl2. Cl2 in contact with Yes. Cl Yes, minus. yes. Cl2 reducing to Cl minus. ऐसा correct है? Is this reduction or oxidation? Oxidation Oxidation. of electrons. Cl2 is 0 and Cl minus is -1. Yeah. What is This is 0 to minus reduction. 1? Reduction. Yeah, Reduction, reduction. gain of Reduction. electron. Reduction. तो कंफ्यूजन Cl. दूर करने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो. इफ इट इज रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग इट इज रिडक्शन, इफ इट इज इंक्रीजिंग इट इज ऑक्सीडेशन. तो द क्लोरीन हाफ सेल व्हिच इज अ नॉन मेटल आयन या गैस इलेक्ट्रोड is conventionally as a half cell represented as Cl2 and Cl negative. समझा? Yes. So first question, the silver is a type of metal Metal. ion वाला electrode. The chlorine is a non-metal ion, that is gas electrode. Yes. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस एक में ही कंसिडर कर रहा हूं, ध्यान देना. फर्स्ट, सेकंड, Ag versus chlorine, which will be selected as cathode and which will be the anode? Ag will be cathode and Cl will be cathode and Ag will be anode. क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें, जो आगे पढ़ाया ना मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, EMF सीरीज, उल्टा होता है ऐसे. हाँ, एक्टिविटी सीरीज का उल्टा होता है. तो उस सीरीज के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग द क्लोरीन विल बी सिलेक्टेड एज द कैथोड एंड Ag विल बी द एनोड. बराबर. तो अब हम हाफ रिएक्शन लिख लेंगे. तो हाफ रिएक्शन में देयर विल बी OHR एंड RHR. RHR. Yes, sir. Ag का ऑक्सीडेशन होगा, Ag plus. Ag जब ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल बी रिटन एज Ag losing an electron to form Plus. Ag plus. Ag plus, Equation. and chlorine का इसका ऑक्सीडेशन, reduction. सॉरी, reduction. क्लोरीन का रिडक्शन would be Cl2 minus 2 gain electrons. Cl minus. electrons to form 2Cl minus. 2Cl minus. Now to write the net reaction I need to balance the electrons, Multiply by 2 in OHR. multiply by 2. So इस पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल ऑफ हो जाएंगे और मेरा नेट रिएक्शन दिखेगा एज Ag solid plus chlorine gas oxidizing to 2Ag ना? Ag plus, sorry, oxidizing to 2Ag plus and Plus 2Cl minus. समझा? तो दिस इज योर सेल रिएक्शन. अब सेल फॉर्मुलेशन करते हैं. सेल फॉर्मुलेशन यानी रिप्रेजेंटेशन. तो इसको लेफ्ट में लिखा जाए. Anode. तो Ag. Ag. So Ag solid will be in contact with Ag plus. Yes, sir. Then this Ag plus will be Indirect. indirectly connected to. Cl2. Cl Cl minus. minus. तो मैंने बोला था कि डबल लाइन के आजू बाजू हमेशा आयंस होना चाहिए. तो Cl minus aqueous and this will be in contact with the Cl. gas. And अब गैस को platinum. कंडक्ट करने के लिए हमें प्लैटिनम की जरूरत होती है, तो वी यूज Pt. दैट्स योर सेल रिप्रेजेंटेशन, एनोड एंड कैथोड. समझा? Yes, sir. फिर फोर्थ में अगर E नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है तो द फॉर्मूला विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ व्हाट माइनस व्हाट? Right. Right minus left. Minus राइट left. माइनस लेफ्ट. अब जब राइट हम लिखेंगे तो रिडक्शन में हमेशा Cl2 Cl minus लिखा जाएगा. द वैल्यू विल नॉट बी ऑफ दिस, राइट? ये आपका रिडक्शन हाफ सेल है. माइनस E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag. ये समझा कैसे लिखा जाता है? दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू रिडक्शन, इसीलिए इसको RPs बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स. समझा? Yes, sir.
नर्स्ट इक्वेशन में ये स्टेप्स फॉलो करना है, चाहे वो थियोरी हो या न्यूमेरिकल हो। जनरली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। अब नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड करना है, तो E ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू, टेल मी, E naught E naught E naught of the cell minus Cell 0.9. minus 0.0592 upon 2 अपॉन 2। अब ये 2 कहाँ से आया? and the Number of electrons. electrons. तो जो यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं वो ये आपका n वैल्यू है, n फैक्टर नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो। सो इट्स 0.0592 by 2 the moles of electron passed into log to the base 10 Base 10 QC। नाउ आपके पास ये नेट सेल रिएक्शन है, तो QC कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन का? Ag raised to 2 Cl Ag raised to plus. 2 Ag plus raised to 2 Cl minus raised to 2 upon the pressure of the chlorine gas. करेक्ट। तो QC में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं वो याद रखो। We don't include the pure Solids and liquids ये because their concentration is unity. perfect, the concentration is almost a constant other। ठीक है, तो आप जब रिएक्शन लिखते हो तो आपका QC बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आयंस है तो उनके कॉन्सेंट्रेशन लेने हैं, और गैसियस है तो उनका प्रेशर लेना है। तो इट्स Ag plus raised to 2 Cl minus raised to 2 and the pressure of the chlorine gas raised to 1। This Ag will be ignored। तो जब तक आप रिएक्शन नहीं लिखोगे आपका नर्स्ट इक्वेशन लिखना बेकार होगा। ठीक है, तो whether it is asked or not asked, the cell reaction and the formulation by default you should write it। फॉर्मुलेशन लिखने से फायदा होता है, आपको E नॉट के फॉर्मूला में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। रिएक्शन लिखने से आपको फायदा ये है कि आपको QC का प्रॉपर रेशियो मिलेगा विदाउट एनी मिस्टेक व्हाटसोएवर। ठीक है। Yes, sir. लास्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाता है? एट इक्विलिब्रियम ये शायद आगे का पार्ट है। E of the cell is equal to 0। इक्विलिब्रियम पे the non-standard EMF becomes equal to 0। एंड जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है तो QC जो होता है रिएक्शन कोशेंट दैट बिकम्स KC. इक्वल टू KC। इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। इक्विलिब्रियम अचीव होने पर रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। मतलब आपका फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा? दिस इज पुट इक्वल टू 0 एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाय KC। यस और नो? तो ये पूरा नेगेटिव टर्म उस साइड चला जाएगा, तो आपको एक और फॉर्मूला मिलता है E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0592 by the number of moles of electron passed into log to the base 10 K equilibrium, which is KC or KP, either ways। So this is to find the standard EMF of the cell। Okay। एंड एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, काफी बार इसकी चर्चा हुई है, बट ये थर्मोडायनामिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसका जस्ट फॉर्मूला याद रखो, -NF into E नॉट ऑफ द सेल। न्यूमेरिकल्स में ही काम लगेगा। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज -N पता है अब हम लोग को क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। F का वैल्यू कांस्टेंट होता है और E नॉट की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। समझा? So F का value is 9650. Yeah, F is Faraday's constant, 96500 coulombs। Clear? Yes, sir. So this is the most important sir. part of the chapter, जहाँ पे nurst equation related questions कैसे solve करना है उसका एक flow दिया है मैंने, and this is the constant flow। एक बार फिर से repeat कर लेता हूँ। If the two half electrodes are given, first decide which will become the cathode and anode। उसको decide करने के लिए EMF series दिया गया है, या फिर values के थ्रू भी आप decide कर सकते हो। मान लो इसका E नॉट का वैल्यू है 0.7 और इसका E नॉट का वैल्यू है 0.6, तो जो हायर वाला है that will always become the
हायर वाला, ऊपर वाला। Cathode, मैंने cathode. क्या बोला था? ऊपर वाला, ऊपर वाला। ऊपर कौन होता है? कैथोड। Cathode. और नीचे एनोड। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि दिस विल बिकम द कैथोड, एंड ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो वैल्यूज जो बड़ा है वो कैथोड बनता है, छोटा वो एनोड बनता है, राइट? Yeah. उसके बाद राइट द सेल रिएक्शन। थ्रू द सेल रिएक्शन राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर दैट फाइंड द स्टैंडर्ड EMF and then find the Nernst equation, and then if asked at equilibrium apply these two relations. Khatam. Numerical Yes. done. Okay, any doubt up till here? Yes, sir. Awesome. Understood? Yes, sir.